Writing notices. Notice. Read the following notice. Before making you understand about this notice, dear students, first of all, I want to let you know that basically we write the notice to convey the brief information of any event to the majority of people. Means बहुत सारे लोगों को एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए हम क्या करते हैं, नोटिस राइटिंग करते हैं. Secondly, it is written in the box. Means we need to write all the information in a box so that it will look quite nice. So in the beginning, first of all, you need to write the organization name. Means school name you should write. Like you can write here the Century School, Gharaunda. Then after that, you need to write in capital letters notice, NOTICE. And before this, remember this, first letter should be capital of your school name. Like the, T is capital, Century, C is capital, school, S is capital, Gronda, G is capital. But in all the letters of notice word should be in capital, right? Then whatever information you want to convey, you should write there. Like our school is organizing a cleanliness drive within and around the school to help keep our premises clean and promote good citizenship and responsibility. The details of the event are given below. So that's the detail of event. Day Monday 15 October 2020, time 9 a.m. Venue means place where we are going to organize that function, or that is what we are going to do. School assembly ground. Student attendance is compulsory. And in the last, we need to sign here and we need to write here the designation of the person. और लास्ट में हमने जो उस नोटिस को लिख रहा है उसके साइन करने होते हैं और उसकी डेजिग्नेशन मेंशन करनी होती है कि उसका पद क्या है, कि उसकी पोजीशन क्या है स्कूल में. क्लास मॉनिटर है, एक स्टूडेंट है, या वाइस प्रिंसिपल मैम है, या वाइस सॉरी प्रिंसिपल मैम है, कुछ भी है तो उसकी डेजिग्नेशन लिखनी है. और हेयर इन द राइट साइड यू नीड टू मेंशन द डेट ऑफ ऑन विच डे you are going to write that notice. Clear? The main function of writing a notice is to give some important information to a group of people. It can refer to an event that has happened or event that is about to happen. Same thing I told you, when we have to convey the brief information to the majority of people, so we write a notice. Basically, we write the notice about an event which had happened or which will happen in future. Right? Characteristics of a notice. There are four important characteristics of a good notice. A notice is complete in all the respects. Who is giving the information? Who is informing? Meant for what is information? What action, if any, is to be taken? A date on the which the notice is being issued. जो नोटिस होता है वो एक कंप्लीट नोटिस होता है, यानी कंप्लीट होता है हर एक रिस्पेक्ट में, हर एक मामले में. जैसे कौन ये इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, किसको ये इंफॉर्मेशन कन्वे की जा रही है, जो फंक्शन या जो भी हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं वो कहाँ पर होगा, और उसमें किस किस तरह के एक्शंस होंगे, सारी बातें ऑलमोस्ट उसमें कंप्लीट और क्लियर होती हैं. Next, it is specific and concise, that is carries only relevant details in brief. जो डिटेल्स होती हैं उसकी ब्रीफ में होती हैं सभी चीज, यानी कि ऐसा पूरा नहीं एक्सप्लेन किया जाता, परंतु ऑलमोस्ट सारा समझा दिया जाता है उसमें नोटिस में, ब्रीफ में हमने बताना होता है. The language is kept as simple as possible so that there is no possibility of a misunderstanding in the reader's mind. जो बातें लिखी जाती हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखी जाती हैं ताकि किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जो उसको पढ़ेंगे. A notice is formal piece of writing but care is taken to avoid a stiff tone. जो नोटिस होता है एक फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग होता है, फॉर्मली हम इसको लिखते हैं, उसके बावजूद भी हमें ज्यादा स्टिफ, बहुत ही सख्त लैंग्वेज नहीं यूज करनी चाहिए. ऐसी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए जो सभी को समझ में आ जाए. Let us take one more example of a notice. BNMB Senior Secondary School. That's first of all we need to write the name. Khojpura, Patna. Notice: a large number of children living in the slums have been badly affected by the recent floods in the suburbs of the Patna.
Our school is raising funds to help these children. Students are requested to donate generously for this noble cause. All contributions, money, medicines, clothes, packages, food, etc., should be deposited with the respective class in teachers latest by 23rd August 2020. Then head girl means like who has written this notice and the date of that day, right? So in this way we need to write the notice. So dear students, there are three exercises: first, second, and third. First and second I will make you understand. Third you have to do by yourself in your practice notebook. First and second I will make you understand. Okay. Our first question is that, first exercise part is that your school is organizing a culture program to raise funds for the school meant for the visually challenged children. आपका स्कूल जो है एक कल्चरल प्रोग्राम करने जा रहा है फंड इकट्ठा करने के लिए उन लोगों के लिए जो विजुअली चैलेंज्ड हैं, यानी कि जो देख नहीं सकते। फेमस सिंगर कैलाश खेर हैज अग्रीड टू परफॉर्म। जो कैलाश खेर जो फेमस सिंगर हैं वो भी वहां पे आएंगे उस फंक्शन में। राइट अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द वेन्यू, डेट, टाइम एंड टिकट्स रेट। आपने एक नोटिस लिखना है जिसमें आपने एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है स्कूल के स्टूडेंट्स को कि उसमें क्या होने वाला है, वेन्यू कहाँ पर है, किस डेट को होने वाला है, टाइमिंग क्या रहेगी और टिकट्स के रेट क्या रहेंगे। So in this way, we need to write. Basically, I told you we should write it in a box. First of all, we need to write the name of the organizations. Organization means like a school name we can mention here. First letter you need to write in the capital letters, and then you need to write in second line Gharaunda. It should be in the mid of that notice. And then notice you have to write in all the capital letters. Then we can give the information in this way. Our school is organizing the culture program for the fundraiser for the visually challenged children. Famous singer Kailash Kher will perform in this program. Tickets fee is 200 rupees. Interested students can give their names to their respective class teachers latest by 10th December 2020. Those who want to participate can participate in the program and names should be given on the 10th of the December. Date 15 December means कौन सी डेट को वो जो फंक्शन है वो हम हेल्ड करेंगे। 15 December 2020, टाइमिंग 10:30 AM, वेन्यू स्कूल एडिटोरियम। तो यहाँ पे जो लिख रहा है सेक्रेटरी है जो स्कूल का वो लिख रहे हैं, हमने उसको नेम दे दिया एक सुनील कुमार, और कौन सी डेट को ये नोटिस पोस्ट हुआ है, कौन सी डेट को नोटिस लिखा गया है नोटिस बोर्ड के लिए, वो है 5th December 2020, right? So in this way you need to convey all the information, and this should be the format of your notice writing. Second notice is that your class is going on a 3-day trip to Agra and Fatehpur Sikri. Write a notice for the notice board inviting names for the trip. Give details about the dates of the trip and the expenditure involved. सो आपके क्लास का एक ट्रिप जा रहा है जो आगरा और फतेहपुर सिकरी जा रहा है। आपने अपने बच्चों को इसके मैसेज कन्वे करना है कि कौन कौन जाना चाहता है और क्या उसकी डिटेल्स रहेंगी, एक्सपेंडिचर खर्चा क्या रहेगा उस ट्रिप का, वो सारी बातें आपने एक नोटिस में लिख के आपने नोटिस बोर्ड पे उस नोटिस को हैंग करने। अगेन द सेम थिंग, यू हैव टू राइट द नोटिस इन अ बॉक्स। द सेंचुरी स्कूल घरोंडा notice. This is to inform you that 7th class is taking a tour from Agra to prestigious Fatehpur Sikri. All the interested students can give their names to the class teacher. तो हो ये तो आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि 7th क्लास का एक ट्रिप जा रहा है आगरा से फतेहपुर सिकरी के लिए। जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो अपने नेम्स अपने क्लास टीचर को दे सकते हैं। जर्नी विल बी बाय द ट्रेन, तो जर्नी होगी वो ट्रेन से होगी। एंड ऑल द नेसेसरी आइटम्स शुड बी ब्रॉट, जो भी नेसेसरी आइटम्स हैं आपको लानी होती हैं वो लेके आओगे आप। द ट्रिप इज फ्रॉम 28 टू 30th December, जो ट्रिप होगी 28 से 30 दिसंबर की होगी। द ट्रिप इज ऑफ 3 days and 2 nights, ये तो ट्रिप होगी 3 दिन और 2 रातों की होगी। द फी विल बी रुपीज 1000 पर स्टूडेंट, इसकी जो फी होगी वो 1000 रुपीज पर स्टूडेंट होगी।
अमित कुमार क्लास मॉनिटर, तो हमने नोटिस का नाम दे दिया, यानी कि किसके द्वारा नोटिस लिखा गया, वो लिखा गया क्लास मॉनिटर के द्वारा लिखा गया है, इसका नाम क्या है, अमित कुमार, एंड 6 दिसंबर 2020. So dear students, in this way we have to write the notice. Main thing you have to write, sorry, you have to remember, you need to write the notice in a box, and first of all in the mid you need to write the school name, and then address, and then notice you need to write in the capital letter, then you need to convey the information what you want to convey, then in the last what is your designation, who is writing this letter, so this notice, and here in the right side you need to mention the today's date, on which day you are going to write the notice, right? So first and second I have done for you, and you can take the screenshots of this, of these notice. These notice may come in your examination, so you need to write these notice in your fair notebook, right? And third you have to do in your practice notebook by yourself, right? Now let's understand about our next chapter. We were on our next previous chapter was that active and passive. This chapter we were studying. Let's come on the chapter active and passive. So we were studying our 12th chapter verbs active and passive. हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे active and passive. हमने इसकी 10 एक्सरसाइज कर ली थी. So we were on the next point. Some key points I told you about the active and passive. Yes, we need to start from here. Page number is 102. 102 page you have to open. 103, sorry. So I told you, dear students, basically what happens in the sentence, there are two types of verb, active verb and passive verb. So when subject is doer of action, जब कभी subject किसी काम को करता है, so in that case we need to use active verb. If subject is not doer of action, that is the receiver of action, in that case we should use the passive verb. जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम करता है तो हमें एक्टिव वर्ब यूज करनी होती है, और अगर सब्जेक्ट के ऊपर ही काम होता है, यानी कि सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है, रिसीवर होता है, तो हमें पैसिव वर्ब यूज करनी होती है. And now we have to understand what is active verb and what is passive verb. Active verb verb की कोई भी फॉर्म, जैसे मैं कहता हूं I say that play, played, played, playing and plays. तो प्ले और प्लेस जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लेड क्या है सेकंड फॉर्म है, अब प्लेड ही थर्ड फॉर्म होती है, और प्लेइंग क्या होती है फोर्थ फॉर्म होती है. तो वर्ब की कोई भी फॉर्म लिखना या बोलना एक्टिव वॉइस सेंटेंस की पहचान होती है. हम वो वर्ब की फॉर्म उसके टेंस के अकॉर्डिंग फील करते हैं. वर्ब की पहली फॉर्म भी आ सकती है, दूसरी भी आ सकती है, तीसरी भी आ सकती है, और फोर्थ भी आ सकती है. इट डिपेंड्स ऑन द टेंस. उसके बाद अगर हमें पैसिव वर्ब लिखनी होती है जिसमें सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है, रिसीवर होता है, उसमें हमें बी की कोई भी फॉर्म लिखनी होती है. बी की कोई भी फॉर्म का मतलब होता है बी की कोई भी फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस. बी की कौन कौन सी फॉर्म होती है? बी की फर्स्ट फॉर्म होती है खुद बी, इज, एम, आर. बी इज एम आर. सेकेंड फॉर्म होती है वॉज, वर. थर्ड फॉर्म होती है बीन, और फोर्थ फॉर्म होती है बीइंग. बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग, ये इसकी चार फॉर्म होती है. चारों में से कौन सी लिखनी होती है वो हमारा टेंस बताता है. टेंस के अकॉर्डिंग हमें वर्ब की बी की फॉर्म लिखनी होती है. उसके बाद हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होती है, राइट? सो वी स्टडीड अबाउट द tenses, means in the tenses how to convert the sentence active to passive. Now we are going to understand some more points of active and passive. Basically we are going to understand about the modal helping verbs. Modal helping verb like can, could, may, might, should, must, ought to. तो इनके साथ सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इट्स अ वेरी सिंपल. लाइक we ought to preserve our heritage. We ought to preserve our heritage. So you can see that after ought to is modal helping verb. We have used root form of the verb, means first form of the verb we have used. So we will write here root form of the be, and then third form the main verb.
ये प्रिजर्व क्या है, हमारी मेन वर्ब है, ये रूट फॉर्म में लिखी हुई है, तो यहाँ पे बी की रूट फॉर्म लिख देंगे। पैसिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, जो भी फॉर्म मेन वर्ब की होती है वो फॉर्म हम बी की लिख देते हैं, और जो मेन वर्ब लिखनी होती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, आर हेरिटेज ought टू बी प्रिजर्व्ड बाय अस। बाय अस लिखते हो ठीक है, नहीं तो वो भी नहीं लिखते हो तब भी ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू विद द हेल्थ, may you be blessed with the health, right? Because in this now you need to make the subject here, so you is subject and bless is root form after the may, so we need to write the be form and then after that third form the main verb. May you be blessed by health, with, sorry, with health, not by. Can you prove this law experimentally? Can this law be proved experimentally? Very simple. Root form we have written here, so root form we have to write of the be, then third form the main verb. Clear? Fourth example, how can one ignore such a serious mistake? How can such a serious mistake be ignored? Root form is written here. Root form we need to write in the passive form of the be and third form of the main verb, right? It's a way to make sentence active to passive. Change these sentences from active to passive. आपने इन sentences को active से passive में convert करना है. I will not do, you will do by yourself. Okay, first I can make you understand and rest of you have to do by yourself. A sudden noise might frighten the baby. अभी ये सडन नॉइज क्या है, ये डू और एज सब्जेक्ट है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो ये जो द बेबी है इसको सब्जेक्ट बना दो और द सडन नॉइज है इसको ऑब्जेक्ट बना दो। तो हम क्या लिखेंगे, द बेबी माइट बी फ्रिटनिड, द बेबी माइट बी फ्रिटनिड। फ्रिटन हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है तो वहां पे बी की फर्स्ट फॉर्म लगा दी हमने, बी फ्रिटनिड। फ्रिटन हमारी फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, फ्रिटनिड। द बेबी माइट बी फ्रिटनिड बाय अ sudden noise. It's a very simple. So in this way, you need to convert these sentences active to passive. Let's talk about the commands. Command means when we give order to someone. हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं बेसिकली सख्ती से, तो वो चीज कहलाती है कमांड्स। ओपन द डोर, अगर इस तरह के सेंटेंस हमें एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने हैं तो हम इसको दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं ओपन द डोर, हम इसको बोल सकते हैं लेट द डोर बी ओपन्ड, या बोल सकते हैं द डोर शुड बी ओपन। अब देखो कि यहाँ पे भी हमने बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज की है, यहाँ पे रूट फॉर्म यूज हुई है तो बी की रूट फॉर्म आ गई, उसके बाद थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखो बी रूट फॉर्म आ गई है, ओपन रूट फॉर्म है तो बी की रूट फॉर्म लगा दी, उसके बाद थर्ड फॉर्म, राइट। हमारे पास डूइंग वर्ब्स होते हैं इंग्लिश में, हैपनिंग नहीं होती, जिसकी वजह से हम पैसिव में हमें उसको ग्रामेटिकल फॉर्मेशन से बनाना पड़ता है। Sell this bicycle off, let the bicycle be sold off, the bicycle should be sold off. It's a very simple way to make sentence active to passive. These are all the things I have told you. The sentence begins with the root form of the verb open, sell. Let object be past participle of the verb, let the door be open, let this bicycle be sold off. Object should be past participle of the verb. Past participle का मतलब होता है कि verb की third form, right? The same thing I have told you. So on the behalf of this understanding, no, something is left. सेंटेंसेस बिगिन विद द लेट, जो सेंटेंसेस लेट से शुरू होते हैं उनको कैसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। जैसे लेट हिम टेक द नेक्स्ट टर्न, द सॉरी लेट द नेक्स्ट टर्न बी टेकन बाय हिम। टेक यानी कि बेस फॉर्म दी हुई है, रूट फॉर्म दी हुई है तो बी की रूट फॉर्म लगा दो, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। मेन वर्ब कौन सी, ये वाली टेक की टेकन। लेट द नेक्स्ट टर्न बी टेकन बाय हिम। लेट अस फॉरगेट द पास्ट, लेट द पास्ट बी फॉरगेटन, राइट। वेरी सिंपल वे। Change these sentences from active to passive. Join these two pieces of paper with gun. So how can we make this sentence? Two pieces of paper should be joined with the gun. It's a very simple. So in this way, you need to do this exercise. Come on, the exercise number 13. Fill in the blanks with the simple past, active or passive forms of the verbs given in the brackets. Last night, some burglars into our house and dash some jewelry. लास्ट नाइट, तो हमने क्या करना है,
एक्टिव या पैसिव वर्ब फिल करनी है। एक्टिव पैसिव वर्ब कैसे पता लगेगा आपको एक्टिव वर्ब फिल करनी है पैसिव वर्ब फिल करनी है? तो अपने देखना है कि जो सब्जेक्ट है वो डूअर है या रिसीवर है। अगर वो डूअर है, अगर वो ही काम को करने वाला है तो एक्टिव वर्ब फिल करोगे। अगर वो काम को करने वाला नहीं है, काम उसके ऊपर ही होने वाला है, तो वो रिसीवर है। द लास्ट नाइट सम बगलर, बगलर ने कुछ किया मींस ब्रेक, सेकंड फॉर्म वी विल यूज ब्रोक, वी नीड टू राइट हियर ब्रोक इनटू आवर हाउस एंड डैश सम ज्वेलरी। तो इसका डैश यानी सब्जेक्ट क्या है, बगलर ही है, तो उन्होंने कुछ चुराया चुराया, तो वो डूअर ही है। तो स्टील की सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्टोल। तो हम क्या लिखेंगे, लास्ट नाइट सम बगलर ब्रोक इनटू आवर हाउस एंड स्टोल सम ज्वेलरी। मींस देयर इज नो नीड टू राइट द पैसिव वर्ब. So dear students, in this way you need to do these old exercise number 13. चेंज दिस सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। अब ये सेंटेंसेस हैं, ये सेंटेंसेस सारे मिक्स सेंटेंसेस हैं। आपने इनको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। यू मस्ट क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग। हम इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, द रोड मस्ट बी क्रॉस्ड बाय अस एट द ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग। बायस लास्ट में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, द रोड मस्ट बी क्रॉस्ड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग बायस, और बायस को हम लीव भी कर सकते हैं। सो यू नीड टू मेक द पैसिव सेंटेंसेस ऑफ दिस एक्सरसाइज. Change the sentences from passive to active. Now it is little difficult, dear students. तो आपने क्या करना है, इन sentences को passive से active में convert करना है. Like our classes were being taken by the senior most teachers. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, the senior most teachers were taking our classes. तो यहाँ पे आपने passive sentences को active sentences में convert करना है, right? So this chapter is completed. So you have to do exercise number 11, 12, 13 and 14th.